just to make this tool efficient enough, because these tools works in the designing part of any chip or any device, electronics device, as well as the verification. So these tools plays a important role in the whole process. And if this tool can be optimized or can be made more intelligent enough using the AIs or any other technology into it, it would be easier to decrease the process of making any chip. And the next domain is just dedicated to the components. MEMS is like a transistor, metallic transistor, sensors. We have, I mean, you might have heard this if you guys are into embedded. We have a wide variety of sensors. Sensors are like our hand, ears, eyes, nose. This is for the electronics. So they also have been designed for engineers for the specific use case. Then comes the test and the others. Test is just in validating the hardware if it is working or not. And others are I'm not aware, but there would be so much of into it, a niche field in the electronics. Okay. You guys have any questions in this till now? Anything related to like any term or something? First year, second year? All right. I think none. So yeah, opportunities. I just pick two pictures which have contained the companies in India which are hugely invested into electronics. You guys might not have heard many of them, like many of them. Only Broadcom, I think, or maybe NXP, possibly. Otherwise, these and companies might. I'm sure you might not have heard. Anyone of you थर्ड ईयर में भी किसी ने देखा हुआ है ये भी कंपनियां हैं इंडिया में जो कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स में काम करती हैं? नो भैया, बस SCL सुना है और NXP, नॉट हर्ड ऑफ अदर्स. अच्छा, ये सो ये सारी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टेड हैं, यूजुअली इन्वेस्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में अक्रॉस लाइक if I have to mention Bangalore, Hyderabad, Pune, Gurgaon, and they have different expertise over the domains which I have shown you here. Okay, over these all domains. I can't point you each one of them, but I know Broadcom. Broadcom is similar to Qualcomm. I haven't, put the picture of Nvidia and Intel and these because you guys are already aware. I wanted to, just give you a nudge to look into these companies. What do they work? What are their portfolio, and how are they performing? So that you will be aware that you can have an opportunity here. And I have finally took a screenshot from an article. I have took a put a reference at the end. This is from Ashwini Vaishnav, who is the ministry, cabinet minister of electronics in India. So he have mentioned that these and all amount of jobs are incoming in the over years, and the market would be going to fourfold in upcoming years. So if you are in like let's say first year or second year, so like in the upcoming 2 or 3 years, this is the best time to be in core electronics, going into the EDA domain or the chip design or PCB design, because the opportunities are incredible and the jobs are coming like a shotgun or something like from all directions. Okay, you just have to be invest your time into it, and you will certainly get the opportunity to show yourself or perform or just problem solve for the India. Okay. And the next thing, so we have came to the final slide. Is this the takeaway, which I think, in my view, for you, that's the demand for a semiconductor in India is huge and it's going to be incredible, and it's going to be fourfold. Figure is around. I mean, I have seen multiple articles, so that's like going to be $100 billion, and this is a huge, it brings a lot, huge amount of and uh, great opportunities to your table, and the jobs are opening like hell in the upcoming years. It's starting, it's gearing up, it's kicking it,
And this is the best time to be semis than never before. If you believe in technology, if you believe in cloud computing, if you believe in AI, if you believe in GPU, if you believe in living a immersive life, if you believe in meta, if you believe in VR, AR, XR, so these are the arena which is gonna explode in the coming time. You should believe in semiconductors. And I think that's it from my side. I conclude here, and these are the references I have used. You can just hover to these links, and you will get more of the information. And I hope I have done the justice to this topic, and you guys have taken away something out of it, and will do Google about it. I will be more than happy to be in touch with you. And thank you guys. This is you can contact me at LinkedIn and through email also. And thank you everyone. Yes, so that's it from my side. Do you guys have any questions, like from first year, second year, any kind of questions? Just fire me, fire it. Bhaiya, we received some questions. So before, can I ask them? Sure. Yeah. Yeah. So like, how has your experience been at Qualcomm, and was it difficult to adapt to the new environment and people routine when you joined? Okay. Uh, so yes, see, when you are in third year, you are still nurturing your mind, and you are looking for the opportunity. So for me, it was new, and I get adapted to the company because it's having great culture. People are really good. They are helpful, and they encourage you to participate and be there, and they let you feel like it's home. So it was pretty easy for me to get onboarded in Qualcomm, and that's it. Yeah. So Bhaiya, what did you work on in your internship? Okay, so I have briefly given you the idea. So generally, I have worked on the technology System C, and System C is a language actually from C only. And so through that, I have made a module doing the architecture. If I have to give you a it just idea is it's a module which have input, and it's a stream of data which is coming into it, and you just have to do the time division multiplexing. And for that, I have to do the modeling, like analog and digital modeling, you can say. And the whole time there in Qualcomm was completely immersive with the technologies, learning every bit of it, and going interacting with the management, and asking questions, because here in maybe academia you might not get the answers to your questions, but if you get into the industry, people tend to answer your questions rather. I mean, they try to understand it, and they get back to you, even if they don't know your question, I mean question answers. Okay, Bhaiya. So this question we get a lot. Did you prepare for core and non-core or both? How did you plan and decide on particular profile? Okay. So you can say I have this philosophy, like when I invest something, when I invest my time into something, I just go with that. So I was investing my time into electronics completely, and I was attending the classes and all. Not that very geeky, but I was the student जो कि 2 हफ्ते पहले ही पढ़ता था, पर still I was regular to the class कि हाँ जाएंगे वहाँ पे, और जा करके एटलीस्ट क्वेश्चन वोश्चन पूछ लेंगे, थोड़ा नोट वोट कर लेंगे. तो आई इन्वेस्टेड माई टाइम, एंड आई फील लाइक कि दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, और मेरे आसपास हैं ऐसी चीजें. Like I was hugely invested into the, you can say, CPUs and internal functioning, कि RAM क्या होता है, ROM क्या होता है. I do used to change the RAMs and ROMs as well, कि upgrade कर रहे हैं, कभी software change कर रहे हैं, even if it is a pirated one. So this is a time of like 2011-12, when I was doing this at my home.
I was pretty interested into the electronics from that time, and then I invested my time and I just followed my gut. And my roommate was also into the course, so we got a company. We discuss with each other like what are the technologies ongoing and what we can do. तो मेरा शुरुआत से ही कोर में था. I didn't prepare for the non-core specifically, but I have a knowledge like the programming and syntax and the data structures somewhat. एंड लाइक इफ यू आर आस्किंग हाउ आई डिड, तो मैं उस वक्त समर में रुका था कॉलेज में ही. वहाँ पे मैं और शिवकांत वाज माय रूममेट. तो we just stayed there and read the Morris Manor completely and solved the questions, gone through the some interview questions over the internet, and that's it. That was my preparation. I was pretty confident कि हाँ हो जाएगा. It's just I have to be stick with my basics, कि मुझे जितना आता है उतना काफी है. And this is enough for an interview to look something into you. And what they want, if I have to tell you, they just want to look into your curiosity. And they also see the basics, is that how confident you are, and things in their basic aptitudes like reasonings, whatever you are saying, are you sticking to that or not. I think I have justified it. Still, if you guys have any questions, you can directly ask me related to your preference, as in like you feel like that this is the question I need to ask related to core or non-core, both of them, because I have seen my friends preparing those, and I am aware like how those things are, you can do, and be prepared for that. Okay, Bia. So next question is, which events did you participate and how much role did they play to get an internship? अच्छा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर, मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट करता हूँ. तो उस वक्त आई डिड पार्टिसिपेट इन कॉमनेट, डिजिसम, एंड देयर वाज वन मोर इवेंट ऑफ एनालॉग. आई डोंट रिमेम्बर नेम. इट्स सिंबलिंग समथिंग. व्हाट्स द नेम? एनालॉग इवेंट. Continue. कॉन्टिनम, यस. तो मैंने 3 इवेंट में फर्स्ट टाइम पे पार्टिसिपेट किया था. तो इट वाज लाइक आई कुडंट मैनेज ऑल दिस 3. तो मज़ा तो आई. आई कुडंट बैग एनीथिंग, टू बी फ्रैंक, कि बहुत फर्स्ट सेकंड मार दिया हो, नहीं. But I learned a lot. The thing is that what I took away from that Udyam version is that I learned the how tools work. I mean, I got to introduce ki spice tool kya hote hain. Until now, we just used to use do the calculations on copy. We have formulas and we have circuitry. Let's say बहुत basic सा बता दूं मैं कि RC circuit है. तो उसका तुम्हें फॉर्मूला पता होता है कि हाँ टाइम जो होता है वो सिंपली आरसी होता है वैल्यू, तो उससे राइस टाइम पता चल जाता है. बट डू यू वांट टू सी दैट कि एक्चुअली राइस टाइम होता क्या है, हाउ इट बिहेव्स, वैल्यूज को चेंज कर करके कि वो राइस टाइम कैसे चेंज हो रहा है, और जो क्लॉक है उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है. तो वो that you can experience in simulation through spice. Just make any simple circuit. You can just put a resistor through some simple voltage source. एक 5 वोल्ट का ले लो, कोई भी सोर्स ले लो 5 वोल्ट का एसी डीसी, उठा करके तुम 2 रजिस्टर लगाओ अपने मन की वैल्यू, और बस ऐसे सिमुलेशन रन कर दो. So at least you will get an idea कि how these things are going. You will get कि तुम्हें potential drop calculated दिख रहे हैं. You can also put a LED like a bulb there. You will find this in LT Spice, or not LT Spice. There's another tool which we do there. And Spice tool is for the characterization for the circuitry कि उसके responses कैसे हैं. तो ये चीज मुझे पता चली. विवाडो मुझे पता चला कि यार विवाडो क्या होता है, विवाडो में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका फाइनली कैसे डंप करते हैं, एफपीजीए में कैसे डालते हैं, और एक्चुअली होता क्या है, एफपीजीए क्या होता है. तो दीज एंड ऑल की ईडीए एक तो पता चले, और फिर एफपीजीए पता चला क्या होता है, और उसके अलावा फिर मैटलैब ऑल्सो की एक्चुअली एप्लीकेशन व्यू क्या है मैटलैब का. सो दीज एंड ऑल थिंग्स. एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम भी सेम डिजिसिम में ही मतलब मैं कोऑर्डिनेट किया, बिकॉज वी वर सो मच इनटू डिजिसिम, एंड वी मेड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि दिस टाइम के हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट करते हैं कि रियल
रियल लाइफ या फिर आसपास जो चीजें तुम्हें दिखती हैं उसको कैसे शो किया जा सकता है। बिकॉज तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी तुम्हारे पास नॉलेज है, कि अनलेस यू कांट अप्लाई इट तो तुम उसको लेके जाओगे कहाँ। तो उसको देखते हुए फिर हम लोगों ने ऐसे पैकमैन को लेकर के बनाया था। पूरा एक डिजिसम में इवेंट था जिसमें आपको एफएसएम डिजाइन करना था, स्टेट मशीन सोच करके you have to think about it. And I mean, at our time we were having like 20 something participation only in digisim, and that was huge, as in like people were very interested. You were coming to our room and asking the questions ki ye kaise hoga, and we were discussing through the whole steps. And इस सब चीजों को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थ्रू दिस यू गेट टू इंटरैक्ट द बेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जितने भी इवेंट हैं, इससे क्या होता है कि यू गेट टू इंटरेक्ट विद योर, मे बी अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो तुम जूनियर्स इंटरेक्ट करते हो, तुम सेकंड ईयर में हो तो तुम अपने सीनियर्स इंटरेक्ट करते हो, यू गेट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम देम। एंड अगर तुम टीम में हो तो तुम टीम को अगर लीड कर रहे हो तो तुम यू विल गेट अ चांस टू लीड द टीम as well, collect the idea, put into picture. So I mean, a lot of things. And that's how I get benefited from the Udyam, and I took over the role of convener so that I can pass on whatever I have learned. Yes. So there is one question. Bhaiya, do you ever feel BTech degree is not enough in semiconductor industry? So should we go for higher degree? Okay. mm, okay, थोड़ा सा ये ambiguous question है. Okay. um, बीटेक इट्स नॉट अबाउट दैट यार। आई मीन सी, तुम कहीं भी चले जाओ, लाइक यू गो टू एनी फील्ड, अल्टीमेटली व्हाट द थिंग्स कम्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। So you just, I mean, it's like a black box. You have to work on it. There is some input, there is an output, and the black box does have some information related to it. You have to read it and apply it and get something out of it. So I don't think so. BTech degree is not enough. See, if you are really looking to go into further exploration and want to make a niche observation, or make a niche uh, impression, then only you need to go for the higher studies. Either way, BTech or the Bachelor of Technology for the Electronics does have all the courses which you need to make an impact in this market. I hope I have answered the question. Yes, Bhaiya. Uh, as you told, you were convener of Udyam. So, what motivated you to take up the convener role, and what challenges did you face in that position? Well, I just told you my motivations. Like I have been carrying these all learnings with me, and I had this thought. I mean, at that time, Tanmay was the co-convener, and when we used to talk a lot about the Udyam and the events which is happening here. And electronics में ऐसा होता है कि people are not really aware, or taking participation into the extracurricular activities. So I have to come into the front to take the role. And the challenges was like कि um, ऑनलाइन ही हो गया था सारा जो कि तुम लोग फेस कर रहे हो। दैट्स अ मेन बिगेस्ट चैलेंज इफ आई हैव टू टेल यू, कि you have to get the people onboarded and teach them, and as well conduct the event on time, and the operations of it, how will it go, and everything from starting to ending. It was the biggest challenge, you can say. बाकी जब तक हम कॉलेज में थे तो तब तक तो सारा कोऑर्डिनेशन जो था बहुत सही था, बट going over the call, and how you have to get everyone at the same time at the starting, it was very challenging. Right now I think you guys might be sync on this particular thing, right? I hope you Yes, are. Bhaiya. So yeah, that's it. Yeah. So, apart from academics, you significantly contributed to other clubs also, like photography. So, did being a core team member of the club relieve you from like regular academic stress, or did it feel like extra burden?
यार एकेडमिक स्ट्रेस तो हुआ ही नहीं अनलेस कि एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। एग्जाम के टाइम में नो वन गोज टू क्लब, यू गाइस नो दिस आई थिंक, कि कोई एक्टिविटी नहीं होती है क्लब का। और जस्ट कि मैं मतलब स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम खत्म हुआ और एग्जाम तक के बीच में ही जो होना है होता है। उसके बाद फिर 2 से 3 हफ्ते जो एग्जाम के पहले होते हैं उस टाइम में ही पढ़ता है आदमी। पहले भी यही करता था, अभी भी तुम लोग यही करते होगे। तो इट वाज नॉट स्ट्रेस फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल, सिचुएशन लगती तब। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा तुमने, अदर पार्ट क्या था? Did it uh, relieve you from the stress ओके, that only? सो जब स्ट्रेस था ही नहीं, बट मैं इसमें पर्सपेक्टिव अपना ऐड करूंगा कि व्हेन यू गो आउट ऑफ योर, यू कैन से, क्लैन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज योर क्लैन, आई मीन ये तो तुम्हारे हैं ही। और कहीं ना कहीं ये तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम्हारे जैसे ही सोच रहे हैं, तुम्हारे जैसे ही देखते हैं चीजों को। ऑलमोस्ट दैट्स व्हाई यू हैव बीन ग्रुप्ड इनटू दिस थिंग, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली। पर जब तुम क्लब में जाते हो, क्लब में पार्टिसिपेट करते हो, यू गेट अ स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल, स्पेक्ट्रम ऑफ थिंकिंग अक्रॉस ब्रांचेस, यू गेट टू नो what and all branches are there and how kind of what kind of peoples are there, and you get to know juniors as well as seniors. So it just gives you the exposure of thinking across, and you enjoy with other people as well, because अगर तुम्हें इतना मजा नहीं आ रहा लेकिन उनके पास पर्सपेक्टिव है तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा वहां पे जाकर के। तो that's why I mean I have been going in through something different from my field, कि I will get more exposure into the audience which are also present in the college. तो आई encourage you all कि क्लब एक्टिविटीज में जरूर जाओ, एटलीस्ट थोड़ा मतलब देख के आओ कि चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट आता है तो वहां पे जाकर के पार्टिसिपेट करो, एंड जस्ट टॉक टू ईच अदर, मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ फ्रॉम ऑनलाइन। एंड that's it, I mean I encourage the most. Yeah, thank you, Bhaiya. So, how did the pandemic and lockdown affect you? Was it to your benefit or disadvantage? ये बहुत ही, ये 01 में क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, तुम क्या डिजिटल वाले हो क्या? ठीक है, मैं थोड़ा एनालॉग करता हूँ इसको, अच्छा। ठीक है। तो देखो यार, मतलब शुरुआत में एवरीवन फेस्ड इट, आई मीन आई कंप्लीटली सी कि अभी अपन जिंदा है ना, ये बहुत काफी है, ठीक है। मतलब जैसी हालत हो रखी थी उसको देख करके क्या होगा आगे, कैसा होगा, too much of uncertainty, but still we are on a place की, हाँ still we can say कि हाँ, आगे कुछ है अभी, आगे कोरोना चला जाएगा और फिर सब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी। पर from the on the starting it was like a disruption, कि you have to get from offline to online. So I faced difficulty in terms of communicating with people, and maybe like just being stucking on continuously with the social media and घर पे हो तुम, so that was difficult for me obviously. एंड फिर थ्रू दैट, बिकॉज डिस्ट्रप्शन ऐसी चीज है कि जो तुम्हें कैसे तो पूरा बदल देती है, एंड दैट्स हाउ ह्यूमन आर सपोज टू बी, आई मीन दे आर फ्लेक्सिबल, दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अदरवाइज you will be removed from the system, you will be thrown out of the system. So we changed, we molded ourselves with the technologies available, whatever we had. सो मैं बोलूँगा कि आई जस्ट लेवरेज्ड इट, मैंने ये नहीं गिव अप कर दिया कि यार तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो रहा है ये। व्यूअर की हाँ, धीरे धीरे करके हौले हौले ही, घर वाले भी हैं साथ में, सबको ही है, दोस्त भी है, अभी बातें भी मतलब क्या मैं बोलूँगा कि ज्यादा ही हो जाती थी पहले से, कॉल वॉल पे हो गया या फिर वीडियो कॉल कर ले रहे हैं, कभी भी बैठे हुए हैं। तो you can see over the time period it was it got become easier, and बीच में मतलब ऐसे बोलूँगा कि अनईजीनेस सा था कि लोगों की डेथ वगैरह हो रही है, तो उस वक्त काफी कह सकते हो आई हैव बीन आल्सो थ्रू कि हाँ यार एक क्या चल रहा है और आगे व्हाट्स द वे हेड, हाउ टू थिंक थ्रू दैट। तो बट स्टिल लाइक जब अगर अंधेरा आता है तो फिर रोशनी भी आती है, एंड दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन लाइफ। सो अगेन जॉब मेरी स्टार्ट हुई कुछ टाइम के बाद, तो फिर उसके बाद इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ा, एंड पीपल
जो इंडस्ट्री में होते हैं, दे यूज टू अडाप्ट मोर बिकॉज दे हैव टू, देयर मोटिवेशन इज मनी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि पैसे के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, दे हैव टू मोल्ड इट। बट स्टूडेंट्स का ऐसा है कि यार पढ़ाई तो है क्या ही हो जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे। तो वहां पे थोड़ा सा एक आ जाता है बैरियर सा, बट स्टिल आई थिंक यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड। And so finally, I think ki, it was a spectrum of emotions through the pandemic. I will say we just have evolved more, and it was a disrupting years, and we got to know more each other, I think, through this, with the family and interaction, and as well with the friends too. And the best part of it कि तुम्हें पूरा टाइम मिल रहा है कि तुम किसी चीज पे फोकस कर सको अभी, जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं ये बोलूंगा, अगर तुम कॉलेज में होते तो मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ तुम्हें, कि कॉलेज में तो शायद तुम्हें पूरी वही कि टाइम पे पूरा क्लासेस करने हैं, जाना पड़ेगा वहां पे तुम ऐसे टीम्स पे जस्ट माइक ऑफ करके कुछ और नहीं कर सकते हो। सो I will say कि I enjoyed that part kind of. uh, so yeah, that's how it is, the whole pandemic situation for me. I just made it analog. So, Bhaiya, what kind of work do you do at your job? Uh, अच्छा, I think I have answered this. What kind of work I so, have? like, it would have been different if it was like on, uh, like, not all in online mode. So, would it have been different? अरे मैं ऑनलाइन ही करूँ, I have been working online. I have this, can say, hybrid, but for Yeah. the first 6 months I have been working online completely. I have been working from home, my native, and it was like 6 months into it completely. Doing the job, and be at home with the homies, everything. I will be very honest that for the that those 6 months from the starting, I was really wishing कि मैं जा करके ऑन साइट अटेंड करूँ, वहाँ पे रहूँ और मिलूँ सारे जो मेरे साथ में टीममेट्स हैं, मेरा मेंटर है या फिर मैनेजर्स हैं, उनसे मिलूं, बिकॉज आई नो दिस कि हाउ वाज द इंटर्न वाज लाइक Mm. कि completely mind blown compared to college. Okay, I have a benchmark, I mean, reference here. So I knew कि how can I do that, how am I capable when I will be there. But फिर still like after 6 months it was कि I mean they called me कि you have to come on site. Then I have been here, but I mean I will tell you the dark side of being on site is that कि you will come to on site, but your teammates might not. That is the thing. I mean, when you will come, they might not come in. There will be only one or two people with you, so it's like mostly the same, but it's just you will be getting an advantage. Or if you are from hardware, then you will be getting the advantage, operate in the in-house, I mean, be there and operate it. But if you are looking for in a company, then you won't find it. So better, now I realize, better be be at your home, and be with your homies, because they are your complete some a support system through this whole thing. And you can explore everything. I mean, just open a tab, or maybe talk to your friends anytime, and discuss over something, make a forum within yourself, just to discuss upon something. Yeah, that's a good suggestion. So, mm. So, since most of us will be giving online semesters, what advice will you give to the students to manage these preparations while at home for internships? अच्छा, इंटर्नशिप्स, आई जस्ट मेंशन, मैंने दो तीन पॉइंट जो फोरम वाला है ना, मतलब सी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग अलोन ना, तो इट्स लाइक अ बबल, बबल ऑफ योर ओन थॉट, कि मुझे ही आता है, मेरे को ही पता है, मैं ही जानता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, और आई एम द बेस्ट। ओके, यू नीड समवन टू शो यू कि यार तू कहाँ स्टैंड बाय कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी गोइंग टू बी बेंचमार्क और बी जज्ड बाय समवन, एंड दैट इज इंटरव्यूअर। ओके, so it's I mean, I will give you maybe two or three, but the main important thing is to form a group of yours with which you find comfortable.
और यू सी लाइक कि हाँ यार अपनी अच्छे से फ्लो हो रहा है, बातें हो रही हैं, एंड मे बी ट्राई विद बिगर फोरम ऑल्सो, कि देखो कौन कौन आ रहा है, और जस्ट स्टार्ट समथिंग, जस्ट सेट अ गोल कि आज ये चैप्टर होगा। लेट्स से मॉरिस मैनो का पहला चैप्टर उठाया, एंड उसको पढ़ा, उसको एक हफ्ते का टाइम दिया कि यार एक हफ्ते में ये करना है। उसके बाद फिर सैटरडे को आए और संडे पकड़े, तो सैटरडे संडे को 2 दिन उठा लो, उसके जो क्वेश्चंस हैं जस्ट यू गाइस आल्सो सॉल्व दैट आल्सो, और उसके बाद फिर डिस्कस करो कि तेरा क्या ओपिनियन है, तेरा क्या ओपिनियन है, तेरा क्या ओपिनियन है। तो उस फोरम में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम मिस कर देते हैं पढ़ते वक्त, हमें भी उस चीज का परसेप्शन नहीं होता है कि यार मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इस साइड से देखा जा सकता है, मतलब इट्स जस्ट अ मेटाफर बट देयर विल बी मल्टीपल डायरेक्शन टू सी अ कॉन्सेप्ट, एंड व्हेन यू गाइस विल डिस्कस, मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि यार मैं दिन भर तो क्लास अटेंड करते हैं, फिर से आ जाएंगे टीम्स में, मतलब कैसे होगा, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई, मैं इतनी चीज कह सकता हूँ। और एक चीज तो ये होगी, दूसरा ये कि प्रिपरेशंस के लिए मॉरिस मैंने मेंशन कर दिया है, तुम ऑनलाइन क्वेश्चन सर्च करो जो कि एक्चुअली फ्लोट कर रहे हैं, कि जस्ट ट्राई टू आंसर इट एंड देन डिस्कस, अल्टीमेटली यू हैव टू डिस्कस। देखो प्रोफेसर के पास जाओगे तो दे विल बी लाइक यार दे डोंट हैव टाइम, okay, they don't have time, or maybe they will give you answer in with some limitation कि हाँ एक लाइन का आंसर दिया और फिर क्या चाहो देख लो अपने हिसाब से जो भी है, और you won't get the कि gist of it, कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीजें चल रही हैं, सब चीजें पता चल जाए। पर जब तुम लोग डिस्कस करोगे ना, तो you will be also sideways googling it कि यार चल गूगल कर लेते हैं यार ये चीज क्या है, फिर उसके 10 आर्टिकल खुलेंगे जिसमें से तुम्हें जो समझ में आएगा उसको खोलोगे, सब पढ़ोगे, फिर थॉट्स डिस्कशन होगा, फिर यू विल अराइव टू अ कंक्लूजन। तो ऐसे में तुम्हारा एक चीज होगा, पहले तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा सेल्फ में, यू विल फील लाइक कि आई एम गेटिंग द कॉन्सेप्ट, आई एम हैविंग द कॉन्फिडेंस कि यार मतलब कि मुझे आ रहा है। तो मेरे को अगर कोई और पूछेगा ना, तो मैं तो फोड़ दूंगा कि यार ये ऐसे 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 यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक खत्म होता है, इसके बीच में ये चीज है, ये ऐसी होती है। वो कुछ ट्विक भी करेगा उसमें कि यार देख, अगर यहाँ से जाने में बीच में अगर कोई चीज हटा दी तो, और कुछ नया लगा दिया तो क्या करेंगे, तो यू विल हैव द आंसर टू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, and this is proven I mean I have done this, that's what I am telling you, and if it sounds meaningful, then just go with it. I think I have yeah, two of them, that's it. Yeah. Uh, Thank you, Bhaiya. So there is one Hard last work, question. सॉरी बाकी हार्ड वर्क, टाइम देना, ये सब तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग कर लोगे। आई डोंट वांट टू मेंशन कि डू हार्ड वर्क, डू पुट योर एनर्जी इनटू इट, डू फोकस, ये सब मैं मतलब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आई जस्ट हैव टू मेंशन कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो आई एम अज्यूमिंग यू आर पुटिंग योर टाइम इनटू इट। ओके, या वी कैन मूव ऑन। Yeah, Bhaiya, there is one last question. So this is the first year, right? So he's asking how many clubs were you part of? हाउ मेनी, So ठीक है। तो मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का नाम क्या है, ये बताओ मेरे को, नाम है कुछ? Simarpreet Singh. ओके, तो सिमर, जब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्या भी एक नई लाइफ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई विद गोइंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जस्ट सी कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो सिमिलर स्ट्रेटजी मैंने भी ये किया था, मैंने भी स्टार्ट ऐसे किया। तो मैं तो रोबोटिक्स, एरोप्लेन वाला भी था, एंड एस्ट्रोनॉट, सॉरी एस्ट्रोनॉट आई थिंक, माय बैड, there was something astro and they were working on this telescope or something. तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजाइन, फैशन, एक्सेप्ट गेम्स, मैंने सारी वर्कशॉप्स अटेंड की थी, एटलीस्ट जो मेन वर्कशॉप्स होती हैं। और उसके बाद मुझे फील हुआ कि यार ये सब चीजें तो मैं करते आ रहा हूँ, मतलब इतना कोई फैसिनेशन नहीं लगा मेरा ये था कि मैं सबसे ज्यादा, मेरे को डर था कैमरे का, कि हाउ पीपल प्रेजेंट देमसेल्फ टू कैमरा, या फिर फोटोज कैसे क्लिक करते हैं। तो मैंने अपने कंफर्ट को छोड़ के एकदम हटा करके मैंने कहा मैं तो इधर ही जाऊंगा, लेट्स ट्राई समथिंग, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ईयर के बाद जिससे मैं स्टिक करके रहा हूँ वो है फोटोग्राफी क्लब कंप्लीटली, एंड एज सच नॉन अदर क्लब, सो ओनली वन क्लब, एंड
मैं फेस्ट में जुड़ा हुआ था, मतलब कि फोटोग्राफी क्लब का जो काउंसिल है वो फिल्म मीडिया है, उससे रिलेटेड एफएमसी वीकेंड होता है, जो कि अभी शायद चल भी रहा है। तो वो उसमें मैंने अपना काम किया हुआ है, और स्पर्धा है उसमें भी फर्स्ट ईयर में काम किया था, थोड़ा बहुत सेकंड में किया था, और नहीं फर्स्ट ईयर में बहुत काम किया था, सेकंड ईयर में थोड़ा किया था और उसके बाद 2 हो गए। फिर उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो क्लब अगर मैं बहुत कोरली बोलूँ तो एक ही था मेरे लिए। मल्टीपल क्लब्स आर डिजास्टर, आई एम सेइंग यू, आई मीन यू विल बी लाइक कि तुमको चार तरफ से हाथ खींच लेंगे वो, तू यहाँ आता नहीं है, तू यहाँ टाइम देता नहीं है, तू क्या करता रहता है, और तुम्हें भी फील लगेगा कि यार तुम, मतलब you don't have that kind of bond with these people when you try to expand your hands in all direction ना, तो तुम्हारे साथ यही होता है कि तुम्हारे हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं so completely I was into the photography, and I have been part of this the complete 4 year till end. I'm also right now part of it through like alumni circle, I can say. I am still in touch with all the people. Yeah. Thank you, Asif Bhaiya, for your courteous presence and for making time for us to get insights regarding skill and further advancing our skills. Thank you. And there isn't any other questions like directly from the first year or second year regarding anything which I have talked about from the starting. I mean, I can show you the slides if you want to go. Let me go through, because I mean I don't have any idea because you guys are not speaking. Only two persons I have seen who are speaking about the PC business. So you can just tell me so that I get to know कि हाँ मेरी बात पहुंच गई है तुम्हारे तरफ। ये नहीं हुआ कि तुमने बस for the sake of attending उद्यम तुम इधर आ गए हो and you guys attending this. Any questions? Just fire it. Bhaiya, if you don't mind asking, what is your package and how is growth in that field? अच्छा, पैकेज तो मतलब 5 साल के बराबर है पैकेज बहुत बड़ा है और डिसेंट एनफ पैकेज है। आई थिंक यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर यार कि प्लेसमेंट में तो आता ही है ना वो चीज। थर्ड ईयर वाले बता नहीं रहे क्या ये? मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़नी थी। एनीवेज, जब मैंने बोल ही दिया नहीं क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा। तो पैकेज फॉर मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा है फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, दैट वाज अ पैकेज ऑफ 23 lakhs, 23.5। ओके, फॉर द कोर आई एम सेइंग। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था तेरा? आगे वाली ईयर्स में कैसे बढ़ा वो? बढ़ता है इस हाँ फील्ड में या नहीं बढ़ता? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ग्रोथ तो हर इंडस्ट्री में है, और ग्रोथ ही एक चीज है जो कि कह सकते हो अभी के टाइम पे ट्रेंड है, हर चीज का ग्रोथ हो रखा है। और growth will be like maybe it will be I will give you a range कि range क्या होती है, so that growth will count from 10 to like 20-30% ऐसा somewhere it will be a decent one. I mean you will get to know, I think कि अच्छा है if you are really looking into the figures, but you should also be aware about the financing and economics की how this works, जो कि मैंने अभी पीछे बात पे की। like when you are talking about the money and all, तो you should also know कि इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री में पैसे कितने हैं और इंडस्ट्री से पैसे कितने निकल रहे हैं। इट्स नॉट ओनली कि तुम कितने पैसे में, तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं। होप आई थिंक कि तुम्हें समझ में आया हो इस चीज के बारे में। यस भैया। ठीक है, बाकी खाना वाना हो गया तुम लोगों का? चल रहा है भैया। चल रहा है, गजब, अरे वाह बस यही उम्मीद थी तुमसे। और क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया आज तो इवेंट्स थे बहुत सारे, लिट क्लब के इवेंट थे, उसके बाद कॉप्स का था, उसके बाद उद्यम का भी था, और अब ये वाला सेशन भी चल अच्छा, अरे तुम एकदम लोडेड है यार तुम लोग तो, बाप रे। रहा है। अभी पीछे 2 दिन पहले मिड सेम्स खत्म हुए हैं ना, तो सबको आजादी मिल गई है अपनी वर्कशॉप्स करवाने की। अरे हाँ, ये तो पुरानी बात है। ठीक है, ऐसे ही होता है, मतलब एकदम भर देते हैं कि तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है, तो एक एक क्या करना है, बस जाओ वहां पे देख के चले और चल क्या रहा है। और बस फाइनली जो मेन बंदा है ना, जो मेन होता है उसके ऊपर चले जाओ कि वो क्या बोल रहा है।
वो तुम्हें एक बार सम अप कर देगा कि ये इस क्लब में होता क्या है। बाकी उसके बाद तो फिर वो यूजुअल है, यू कैन ऑलवेज आस्क समवन जिसने अटेंड किया है, बाद में पूछ लिया उससे कि कराया क्या क्या था, इन केस यू आर स्टडी। सारी चीजें नहीं हो। सारी नहीं हो पाती, गिनती की 1-2 हो पाती है उल्टा। हाँ हाँ, यूजुअली ऑब्वियस है यार, ये तो मतलब कितना ही करेगा आदमी, दिमाग एक ही है, 4 जगह कैसे लगाएगा आदमी। भैया आप रोबोटिक्स क्लब में एक्टिव नहीं थे? नहीं नहीं, मैं रोबोटिक्स क्लब नहीं। में जो जाते हैं वही रोबोटिक्स क्लब में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब ट्रॉनिक्स में जो कोर में जाते हैं। अभी तक मुझे ऐसा दिखा। नहीं नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है यार। सी रोबोटिक्स क्लब वाले जो कर रहे हैं वो आउटडेटेड लगता था मेरे को, मैं जब था उस वक्त कि ये कर क्या रहा है। I just couldn't understand कि why you have to make these kind of robots or just a vehicle like that। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में रोबोट्रॉन होता था हमारे यहाँ, तो अभी हो रहा है तुम लोग क्या ऐसा कुछ नाम हम सुना रोबोट्रॉन करके? तो उसमें क्या था कि हाँ जी, हाँ जी। बोलो बोलो। नहीं, हमारे यहाँ अभी कुछ कुछ रोबो लीगा हो रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, नाम चेंज कर दिया, ओके होगा भाई। तो उसमें यू हैव टू मेक अ व्हीकल मेड ऑफ सम सर्किटरी, जिसमें वो घूम लेता है, मोटर लगा दिया, सिंपल ओके। उसके बाद फिर उसको रिमोटली कंट्रोल करना है तुम्हें ब्लूटूथ के थ्रू। उसमें भी तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें रिसर्च करना है, जाके देखना है, उससे करना है, नहीं, दे विल जस्ट टेल यू स्टेप बाय स्टेप ये चीजें इसको कर लो, हो जाएगा, चला लेना, अकेले कर लेना, हो गया। और आई मीन मेरा जो इम्प्रेशन था जस्ट यू नो कि कर क्या रहे हो तुम लोग, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो। सो उसके बाद फिर मैंने कहा यार मेरा ये वो नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में सीख लूंगा, आगे जाके करना होगा कर लूंगा, और मतलब कुछ मीनिंगफुल करूंगा। मुझे वो मीनिंगफुल लगा नहीं, इन शॉर्ट में बोलूँ तो। पर हाँ, तुम लोगों में से अगर तुम्हें लग रहा है तो दैट्स गुड, दिस इज माय ओनली परसेप्शन, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट अटेंड इट, ओके, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। मुझे बस ये था कि मुझे अपना कंफर्ट जोन से आया, मुझे लगा कि रोबोटिक्स वगैरह इजी, जस्ट यू नो कनेक्टिंग द वायर्स एंड putting some circuitry and getting the frame and just you know, having some software and using it, that's it। ओके भैया, थैंक यू। you're welcome। और कोई ऐसे ही क्वेश्चन? भैया बेसिक डिजिटल के सिवा और क्या क्या पढ़ा था आपने अपने टाइम में इंटरव्यूज के लिए? एक बेसिक डिजिटल तो हो ही जाता है सबका, और एक वेरीलॉग होती है। करेक्ट। तो बेसिक डिजिटल के अलावा ये स्पेसिफिकली टारगेटेड टू सम एफएसएम के क्वेश्चंस, मतलब जस्ट गूगल करके एफएसएम प्रॉब्लम्स और एफएसएम बेस्ड कोई एप्लीकेशन, जस्ट टू हैव अ पिक्चर की एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है। बिकॉज कल के इंटरव्यूअर तुमसे आता है और तुमसे बोलता है कि गिव मी एन एफएसएम और गिव मी एन स्टेट मशीन डायग्राम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक्स लेट्स से, और तुम्हें बस ये पता है कि वो काम कैसे करता है। तो इट कैन बी ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो, कि मान लो स्विगी हो गया, तो स्विगी का एफएसएम बना के दे मेरे को। स्विगी में जब मैं स्विगी बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा ये है कि ऑर्डर प्लेस करते वक्त यू हैव समथिंग, यू आर गोइंग ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर, यू विल पे इट एंड देन यू विल ट्रैक द ऑर्डर। तो इसका एफएसएम बना के दे। स्टेट मशीन, आर यू एज अवेयर स्टेट मशीन? नॉट एग्जैक्टली भैया। ठीक है, जब पढ़ना दिमाग में रखना इसको, अभी बताऊंगा तो फिर कहानी हो जाएगी। स्टेट मशीन जब पढ़ोगे तो पूरा समझ में भी आएगा, और एग्जाम्पल भी याद रखना। तो ऐसे ही मतलब कि मैं रियल लाइफ में ढूंढता था यार कि इट्स नॉट कि जस्ट यू हैव एन एक्स एंड वाई, नहीं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसे रिलेटेड हैं, उसको कैसे इस चीज़ में ढाली जा सकती है, यही मेरा मोटिव था। मैं ऐसे गूगल जनरली मारता था ऐसे। और मतलब मैं एक्सपीरियंस अपना इंटरव्यू का दूं तो इट वाज मोर ऑफ अ जेनरिक क्वेश्चन। मतलब वो तुमको बोल देगा कि अच्छा, तो एक काम कर, मतलब सम बिट ले ले, और दो बिट, सम एक्स बिट है और दो नंबर है एक्स बिट्स के, उसको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, एफिशिएंटली करना है, कैसे करेगा? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसे टाइप से क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। मतलब उनके दिमाग में जो भी तुम्हारे आएगा वो तुम्हारे बेसिक को उठा करके पंच मार देंगे तुम्हारे ऊपर। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम पढ़ क्या रहे हो एंड हाउ इट कैन गो इन अराउंड यू।
if I have to tell you कि if you have to take away from this कि ये चीज़ कि तुम क्या पढ़ रहे हो और उससे क्या समझ में आ रहा है और कैसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, ये है, इसको दिमाग में डालो। बाकी आपने वेरिलॉग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी किया था? नहीं, मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने नहीं किया, मैं वेरिलॉग कोडिंग कर रखी है मैंने, हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट कर रखा है उस पे तो प्रॉपर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज लाइक कि टू मच फॉर मी मुझे ऐसा लगा उस वक्त, मुझे लगा कि यार इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस बेसिक्स पढ़े थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, क्योंकि ऑलरेडी जब तुम अच्छा वो बाद में आता है, ठीक है, सॉरी, यू विल गेट टू नो उसके लिए, बट थर्ड ईयर के इंटर्न के लिए आर्किटेक्चर में वो लोग इतना नहीं जाते हैं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊँ तो ऐसा नहीं कि तुम्हें वो करा दे, मतलब प्रणव से ही पूछ ले, इसकी तेरी इनवीडियो में लगी ना, हाँ भैया, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कितना रहता है? नहीं वो पूछते नहीं है। पूछते ही नहीं एग्जैक्टली, मतलब हम लोग एग्जैजरेट कर देते कि हम प्रिपेयर हो गए यार, लेट्स से वो पूछ भी लेते ना, तो तुम ये बोल सकते हो कि आई एम वेरी स्टक विद द बेसिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो मेरे मतलब मैं यूं ग्रैब अप कर लूंगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि जेडी होगा, जॉब प्रोफाइल होगा, जॉब प्रोफाइल होगा, उसको तुम देखोगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े टर्म्स होंगे, लेकिन यू कैन ऑलवेज टेल दिस की दिस इज व्हाट वी नो एंड I have a strong solid base with my basics, and it's just a matter of time when I can learn this computer architecture when it is in need. Hope it answers your question. मतलब मैंने नहीं पढ़ा था उस वक्त, मैंने बाद में कोर्स आता है अभी, ये पढ़ रहा होगा प्रणव 7th सेमेस्टर में, सॉरी 6th में, 6th में जैसे आता है, 6th में आता है। माइक्रो प्रोसेसर करके आता है, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, 8085 इंटेल का पकड़ के वो तुम्हें बता देंगे कैसे काम करता है, इजी। बाकी लाइक इफ यू गेट टू लाइक अभी प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं तुम्हारे पास, जैसे डिजिसिम के अलावा एक और इवेंट है, कौन सा इवेंट है प्रणव, विवाडो जिसमें टूल इन्वॉल्व है, आई चिप। आई चिप का, तो वहां पे ये लोग थोड़ा सा मतलब कोशिश करते हैं कि तुम्हें पुश किया जाए वहां पे, ठीक है, तो जस्ट टू नो तुम्हारी लिमिट है, मतलब तुम्हें अगर लग रहा है कि यार यू कैन ग्रैब सम कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, मेक इट अ ब्लैक बॉक्स, पुट सम इनपुट, गेट द आउटपुट, तो घुस जाओ उसको लेकर के, कुछ नहीं है, 4-5 पेजेस होंगे, उसको पढ़ना है तुम्हें, उसके बाद समझना है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसमें लगाना है और उससे सोल्यूशन निकालना है, यही है, मतलब ऐसा कोई बहुत एडवांस चीज नहीं होगी, मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा था, लगेगा तुम्हें कि यार ये यहाँ पे क्या जरूरत है, जैसे मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एग्जांपल दिया, लेकिन बस यही है कि तुम्हारी कितनी चाह है, इच्छा है उसको खींचने की, तो और उसको अगर तुम्हें देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो कि जैसा ब्लैक बॉक्स जिसको तुम्हें जानना है और उसके बाद फिर इनपुट और उससे आउटपुट निकालना है। होप मतलब ये मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ब्लैक बॉक्स वाला होप तुम लोग को समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यस भैया। ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक एक क्वेश्चन और किसी और को पूछना हो तो बताओ। अच्छे पीपीओ के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? यार पीपीओ दिला देंगे, अच्छा पीपीओ नहीं पता मेरे को तो क्या करना पड़ता है? तो पीपीओ के लिए यार तुम जब जहाँ इंटर्न करने जा रहे हो जस्ट मतलब अपना बेस्ट दो, यही होता है उसका, बाकी फिर उनके हाथ में होता है, बिकॉज उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स ऐसा कि मान लो उनके यहाँ ओपनिंग ही नहीं है तो तुम्हें वो कैसे ही देंगे इंस्पाइट की तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो फैक्टर तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारा अटेंटिवनेस, तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारी लगन, सब कुछ, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, एवरीथिंग। क्या क्या चेक करते हैं वो? क्या check? अच्छा मतलब कुछ यूनिक कुछ अच्छा मैं तुझसे पूछता हूँ, कोई कोई है तुम्हारे यहाँ कोई मतलब वो आती है काम करने वाले लोग हैं ऐसे, या फिर आसपास जो काम हम करते हैं उनको तुम कैसे जज करते हो, उनका काम ही देखते हो ना, इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुम उनका काम देखते हो कि मान लो बाहर कोई ऐसे, एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम जहाँ पे रहते होगे तो वहाँ सड़कें तो होंगी, तो सड़कें से कोई साफ भी करता होगा, तो तुम उसको देख करके यही तो बोलते हो यार साफ करिए कि नहीं सही से, उसने अपना काम सही से किया है या नहीं, दैट्स इट। मैं इन जनरल बता रहा हूँ बिकॉज ये वैरी करता है अलग अलग डोमेन्स के लिए,
तो मैं स्पेसिफिक नहीं हो सकता कि ये चीज़ देखता है। तुमने काम सही से किया है नहीं, ये कोर होता है इसमें। उसके बाद फिर तुम्हारा बिहेवियर कैसा था एंड हाउ यू वर इनटू द पार्टिसिपेशन एवरीथिंग, तो सेकेंडरी फैक्टर्स है, मेन यही होता है तुमने काम कैसे किया। खत्म। थैंक यू कोई भैया। rocket science नहीं है, मतलब तुम मेरे से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? बोल बोल, रुक गया तो उधर ही। हाँ, नहीं बस ऐसे ही पूछना था, जैसे अभी फर्स्ट ईयर है मेरा, तो क्या क्या मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा क्या करके? नहीं नहीं नहीं, नो नथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट बी योरसेल्फ। ओके। नहीं थैंक नहीं, यू। हाँ, you're welcome. ओके, लेट्स रैप इट अप। आई थिंक मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दिए दिए हैं, और अगर अभी भी तुम लोगों को लगता है कि हाँ यू हैव समथिंग टू आस्क मी, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट एट लिंक्डइन और द ईमेल आईडी आई हैव मेंशन। मैं ये पीपीटी दे दूंगा प्रणव या अक्षत को, यू गाइस कैन यूज इट फॉर एटलीस्ट यूज द टर्म, आई मीन सी दैट टर्म एंड गूगल इट। इतना कर लेना तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो पीपीटी था या फिर मैंने जितना इतना ज्ञान मारा है वो धन्य हो गया। ठीक है, इतना कर लेना तुम लोग, काफी हो जाएगा ये। ठीक है, और बाय द वे थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई think it's interactive, at least in the end, कि some people came and asked some questions. It's pretty positive. मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं पर also thank you प्रणव और अक्षत and the whole student organization who is conducting this UDYAM and the alma mater. I hope कि मैं आ सकता इन पर्सन तो तुम लोग से मिलते भी और देखते कि तुम लोग क्या कैसे क्या है, क्या कर रहे हो। शक्ल पे तुम लोग की शिकन दिखती थोड़ी सी, पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। कोई कुछ खा रहा होगा, कुछ पी रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा इधर उधर, कोई सुना भी रहा होगा कि कितनी देर तक खींचेगा ये। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू बाय, भैया। थैंक गुड यू भैया, नाइट। बाय, गुड नाइट। प्रणव मैं तुमको दूं या फिर उसको, अक्षत को? ये किसी को भी भेज दो। ठीक है, मैं अक्षत ही अक्षत इज फाइन। ओके, cool, चलो ड्रॉपिंग ऑफ देन।